let's start our second session of GameCraft Bootcamp. First of all, about me, who am I? Actually, I am Muhammad Huzaifa, doing BS Computer and Information Sciences in PIEAS University, Islamabad. And I'm also currently game dev lead at GDSC PIEAS with my co-lead Muhammad Musa and my game overall lead Muhammad Abbas Bukhari. Today's topic is about game design. Game design tells us about how we actually make games, like the ideation. Some of you might confuse game design with game art or something associated with graphics, but it's not actually like that. Game design is completely different from game art. In game design, we think like how the game will work and what's the idea behind it, what are the aesthetics of the game. And while in game arts, we make the assets and stuff like that. How's the house gonna be? How's the pedestrian gonna look? How's the vehicles gonna play? So that's the main difference. That's the formal definition of game design. Game design is the act of deciding what a game should be. It actually tells us how our game will perform, how our audience should feel when they play our game. If they feel very uncomfortable, it means that it's a very bad design game. Or if it is like we are as a developer think of something else and our audience are not liking with what we thought of the game during the production, then it's also an unsuccessful game. So a good game design is very essential before we program. So what's your responsibility as a game designer? First of all, you're going to pitch ideas for the team. Like you need to get the main ideas about the game. And then once you get the ideas, you're gonna design docs and assets list, like how you're gonna do this mechanism, how will the player progress, how will they save game, like stuff like that, and how will the players look, what will the overall theme, etc. And after that, they will do some scripting and spreadsheets where they will list down all the mechanics and all the buffs and nuffs, like how fast the player can move, every numeric stuff. They just line it up in this scripting. It all starts with an idea, and sometimes the idea is like, what if cows could do karate? Most of the best games always come from weirdest ideas. So don't hesitate to think weird of the ideas. Most of the weirdest ideas are often the most top pitched ideas. So your thinking should not have any boundaries while you're thinking as a game designer, because most of the typical ideas are already taken and they are kind of boring to have so much basic ideas, like I just gonna make a game in which you can just race your car along the way. It's too boring. Why not we do this like a car with a rocket booster which can fly in the space or something like that. It will be a much fun to play. So creating good ideas is very essential. Now let's talk about the importance of game design. First one is the creativity. You need to show 200% of your creativity in game design. Second one is storytelling. You need to express what you want to express through your game. If you want your people to feel horror, and you need to add some stuff like that so that you easily communicate with your audience. Third one is the increased game aesthetics. Means that your game should all also have assets and environment which makes you feel the storytelling, which makes you feel what the game makers are trying to convey to you. And fourth one is obviously the game mechanics and gameplay. We'll talk about this later in these slides, but for now it is also an important part of game design. Okay, so once you got all your ideas, you need to list them down. So that's where the game design document come in. A document which serves as a blueprint for your game. This is the game design document. It contains all the stuff which you have decided for your game and you wrote them down in a proper way so that if you are mostly in large scale, you are not the only one who's making a game, but on large scale there are different people working on a same game, so you need to convey your ideas to other peoples of your same team.
So that's why these come in handy, and they are very useful to convey what you want in the game, and the other can easily understand what you want for the game. So what does it actually includes? It includes a bunch of stuff like the one I listed in the left side, but mostly it consists of 5 parts. First one is the concept summary, and second one is the gameplay. Concept summary includes what your game will like the idea of this game, and gameplay includes how your player can interact with other stuff and how you can progress through the game. That's the gameplay. Third one is the mechanics, like how the user will progress in, like, for user to progress, what steps will he take to progress? These are the mechanics or stuff like that. For example, in shooting games, there are core mechanics like shooting and running and staying in cover. These are the steps which he takes to complete the mission. Fourth one are the game elements, like what is the environment, is it going to be a spaceship, is it going to be a superhuman, etc. These are the game elements. And finally the assets mockup, like how's gonna they look like, some art design, some handy sketches of the characters. It's going to be included in a game design document. We can also add much things like the ones mentioned in the left, like game title, storyline, character design, UI design, setting, etc. It's going to be 2D or 3D, AR or VR. There's a lot of stuff. The list goes on. You can make it from one pager to 5 pager, or maybe for big games, it's gonna cross over hundreds of pages. Let's take a look at the template. Let me just open it. ओके, तो ये मैंने उठाया था एम लैब्स के, अभी रिसेंटली हुआ है चैंपियन गेम जैम। तो उन्होंने इस तरह का गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट रखा था। इट्स वेरी गुड वन, आई सॉ दैट, आई रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। कि आप स्टार्टिंग में अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स डालते हैं, गेम नेम लगाते हैं, टीम नेम, और उसके बाद नीचे आप लोग आईडी अपना डिस्क्राइब करते हैं। 2 मिनट। ओके, सॉरी। सो आइडिया आप लोग अपना यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हाउ यू गोना डू योर आइडिया, and then what your goal, what's the ultimate aim of player playing the game. Will it be fun, will it be entertaining or satisfying, what you want yourself to express to your player. And next about the mockups, like what are you gonna be make your characters like. Use mockups that you have made, stock images like game screenshots, like some prototype beta releases of your game. You wanna add those up. एंड फाइनली रेफरेंसेस, लाइक इफ़ यू हैव टेकन एनी रेफरेंसेस ऑफ सम अदर गेम। जैसे कि अगर आप लोग कोई रेसिंग गेम बना रहे हैं, तो आप शायद उसका रेफरेंस कोई ले रहे हो, अच्छा हाँ ये मैं नीड फॉर स्पीड में ये चीज़ देखी थी मैंने, वहाँ पर उसके अंदर नाइट्रो बूस्टर से गाड़ी बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है। तो मैं उनकी तरह से यहाँ पे लाना चाहता हूँ कोई चीज़, नाइट्रो बूस्टर्स लाना चाहता हूँ, मगर मैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाना चाहूँगा। तो ये आप रेफरेंसेस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अप आर्ट स्टाइल होता है आपका। आर्ट स्टाइल आप रख सकते हैं 2D होगी, यानी प्लेन आपका होगी गेम, 3D होगी, 3 डायमेंशनल, पिक्सलेटेड होगी, कार्टून, इस तरह से लिस्ट गोज ऑन। एंड नेक्स्ट अप हाउ यू लुक एंड फील, लाइक इफ द फर्स्ट पर्सन कैमरा, लाइक मूसा सेड इन द प्रीवियस लेक्चर, के फर्स्ट पर्सन में ये होता है कि आपके तरफ गन शो नजर आती है, यानी कि आपके पर्सन के आईज में से दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से आप फील कर रहे हैं। थर्ड पर्सन सिमिलरली, उसमें ये होता है आपका प्लेयर सामने नजर आ रहा होता है विदाउट, और साथ में आप उसको देख रहे होती है मूव करते हुए। इसी तरह डिफरेंट एंगल्स हैं। मैकेनिक्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टेल वी विल डिस्कस देम लेटर, बट फॉर हियर लेट्स सी। there could be portrait control, landscape control, you can tap, swipe, slide. For example, in Subway Surfers, the main core mechanic is swipe, so you can swipe and change the lane. Okay, so don't back with the presentation. Also, by the way, we'll take all the questions at the end. So bear with me for the presentation and note down any questions if you have. We'll take all the questions at the end. So think outside the box always, because those who think outside the box always win, especially in game industry. क्योंकि गेम इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए गेम्स की कमी नहीं है,
बहुत ज़्यादा हज़ारों में गेम्स पड़ी हुई हैं, मगर आपकी गेम्स अभी भी आती हैं लेटेस्ट। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा हाँ गेम्स तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बन गई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको और गेम्स की ज़रूरत ही नहीं है। गेम्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी। पीपल ऑलवेज गेट बोर्ड ऑफ ओल्ड गेम, दे वांट न्यू गेम्स, एंड फॉर द न्यू games to rise and to get popular, they need to have something unique. How gonna uniqueness come through? They're gonna come through good game designers. And who are those game designers? They are you. You are the future game designers. So you need to think out of the box and games. It's totally fine to take inspirations from the current games, but you don't need to do a ditto copy paste. You need to inspire from them and make something different that you think is gonna work, or it's something more fun than the other one. And that's also an example from a real game. It's called Recent Chase. I got it from the internet. I thought it would be good to display to you guys. Like it got a concept and then story and then game structure, players, action, objectives, everything. I also explained in the template. So I think I'm gonna just skip over it. So that's the main point of our presentation. Sorry, game mechanics and controls. ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने इट हेक्सा ड्रॉ। हाँ, इससे पहले एक आप लोगों को समझना पड़ेगा MDA। व्हाट इज इट स्टैंड फॉर? वेट अ मिनट, लेट्स जस्ट मेक 3 arrows। ओके, M stands for mechanics, D stands for dynamics, and A stands for aesthetics। ओके, थोड़ा सा रफ है मगर आई थिंक गुजारा कर लेगा। सो व्हाट इज इट? MDA. MDA stands for mechanics, dynamics, and aesthetics. It is very common in game designs. Game designers keep this in mind while making their games. So what does it do? Actually, these are interlinked. Wait a minute, मैकेनिक्स को थोड़ा सा दूर रखते हैं, इसको डायनेमिक्स से इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, ये इस पे लिंक हो रहेगा और ये इस पे। ओके, सो मैकेनिक्स क्या होते हैं आपके गेम के? मैकेनिक्स आपके ये होते हैं कि आप क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं गेम के अंदर। फॉर एग्जांपल, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है। कॉल ऑफ ड्यूटी में आप क्या कर सकते हैं? आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, एनिमी को मार सकते हैं, आप फ्रैग ग्रेनेड फेंक सकते हैं, आप चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की आ जाती हैं मैकेनिक्स कि आपका प्लेयर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। अब ये मैकेनिक्स जो होते हैं, अब जो बंदा मैकेनिक्स परफॉर्म करता है उसके रिजल्ट में क्या होता है? डायनेमिक्स प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट आर डायनेमिक्स? डायनेमिक्स आर एक्चुअली व्हाट द गेम character does in response to the actions of the user। यानी कि जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक्शंस, जो जिनको हम मैकेनिक्स कह रहे हैं, उनके करने से आपका करेक्टर क्या कर रहा है। जैसे कि आप शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग करने से आपका करेक्टर किस तरह की डायनेमिक्स आप लोगों को बता रहा है। यानी अगर आप लोग रन करके शूटिंग कर रहे हैं तो मतलब ये बता रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रूटली आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप रन एंड गन करने की कोशिश कर रहे हैं। So that's a dynamics, like how the game will respond to your actions। और डायनेमिक्स जब आप लोगों क्या देते हैं, डायनेमिक्स अफेक्ट द एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि जो आपके एसेट्स होते हैं उनको नहीं कहेंगे कि यानी कि आपकी गेम के इन्वायरमेंट इस तरह, वो एस्थेटिक्स नहीं है। यहाँ पर एस्थेटिक्स का मतलब है कि आप लोगों की गेम की फील किस तरह की आ रही है आप लोगों को। जैसे आप लोगों की हॉरर फील आ रही है, आप लोगों की साईफाई किस्म की फील आ रही है, आपकी कॉमेडी फील आ रही है, आप लोगों की कार्टूनिश फील आ रही है। तो ये फील आप खुद एक्सटर्नली नहीं डाल सकते। एट सम एक्सटेंट आप डाल सकते हैं एसेट्स वगैरह से, कार्टूनिश यूज़ करके आप कार्टून वाली फील ला सकते हैं। मगर रियली अगर आप चाहते हैं कि जो एंड यूज़र आपका बैठा हुआ है वो फील करे आप लोगों की एस्थेटिक्स,
तो उसके लिए आप लोगों को मैकेनिक्स और डायनेमिक्स को इस तरह से आप लोगों को इंटरलिंक करना पड़ेगा कि वो आपके एस्थेटिक्स को खुद सपोर्ट करें। तो ये किस्म की लिंक लिस्ट बन जाती है कि मैकेनिक्स के थ्रू आपके डायनेमिक्स कंट्रोल होंगे, डायनेमिक्स के थ्रू एस्थेटिक्स। सो दैट्स द MDA कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन गेम्स कि आप लोगों को मैकेनिक्स को बेहतर करना है, मैकेनिक्स के थ्रू आपके डायनेमिक्स भी बेहतर होंगे, और इन द एंड आप लोगों के एस्थेटिक्स अल्टीमेटली बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो आई गेस आप लोगों को मैकेनिक्स, डायनेमिक्स और एस्थेटिक्स का पता लग गया होगा। तो लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। So game mechanics and controls. That's the formal definition of mechanics. Mechanics are the game rules that define the gameplay and how the game reacts to player actions. मीन्स कि आप लोगों की गेम के जो रूल्स डिफाइन हुए होते हैं, आपके उसके साथ प्लेयर कैसे रिएक्ट करता है, यानी आप कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके मैकेनिक्स होते हैं। मैकेनिक्स की आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होते हैं आपके कोर मैकेनिक्स और एक होते हैं आपके सेकेंडरी मैकेनिक्स। कोर मैकेनिक्स तो यही हो गई, यानी जो आप मेनली कर रहे होते हो, मूवमेंट कर रहे हो, आप कॉम्बैट कर रहे हो। जैसे टेकन के अंदर है, टेकन के अंदर आप मेन आपका कॉम्बैट होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, आप सुपर मूव्स भी लगा सकते हो, आप जो है प्रे कर सकते हो उसको। तो ये सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो इसी तरह से ही है। सेकेंडरी को आप दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शनल आपके मैकेनिक्स होते हैं, कि उसके बगैर भी आपकी गेम चल जाएगी, मगर वो आपके ना कोर मैकेनिक्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं इन अ सेंस। लाइक सेकेंडरी के अंदर हमने एग्जांपल दी हुई है क्राफ्टिंग की। जैसे माइनक्राफ्ट के अंदर होता है, माइनक्राफ्ट में आप वैसे भी आप मेन मैकेनिक उसका मूवमेंट है और क्रिएटिंग स्टफ है, मगर आप क्राफ्टिंग टेबल के थ्रू क्राफ्ट भी कर सकते हैं न्यू चीज़ें। एंड डायलॉग सिस्टम्स आप दूसरे, जैसे GTA 5 के अंदर है, आप दूसरे प्लेयर्स NPCs के पास जाएंगे, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मेन आपका नहीं होता, मगर एज एन ऑप्शनल डाला होता है। And also stealth is also optional in some games like Assassin's Creed and Sekiro, but mostly लोग stealth को इतना सीरियसली लेते नहीं है, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। मैंने जो देखा है, जो भी stealth गेम होती है सबसे पहले उसी को ही रश की तरह खेलना होता है। And that's something like that. Game says that stealth is an option for this mission, and you like, no, hell no, I'm not gonna do the stealth, and you just go in and rush. Okay, so next, let's take a case study here to understand more about the game mechanics and controls. You guys might have played Cut the Rope game in your childhood or maybe now. बड़ी मजे की गेम है। इसमें होता ये है कि आप लोगों के पास ये ग्रीन कलर का मॉन्स्टर होता है, इसका नाम होता है ओम नॉम। इसको आप लोगों ने कैंडी फीड करनी होती है। अब ये कैंडी कैसे फीड करनी होती है, ये आप लोगों की यहाँ पे रोप के साथ ऊपर लगी होती है। अब आपने रोप को कट करना होता है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से होता है, या आप लोगों की कैंडी रोप के साथ लगी होती है, और आप लोगों को उसको इस तरह से मैनेज करना होता है कि वो उसको फीड कर दी जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, मज़े की गेम है। तो इसके अंदर कोर मैकेनिक्स क्या होते हैं आपके, यानी आपने रोप को कट करना होता है, रोप कट करके आपने कैंडी पहुंचानी होती है ओमनम तक। दैट्स द मेन कोर मैकेनिक। ऑल्सो इसके अंदर डिफरेंट फिजिक्स बेस्ड भी होते हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको ना गेम चला के दिखाते हैं। ऑल्सो सजेस्ट यू गाइस टू ऑल्सो प्ले दिस गेम। ओके, सो द गेम्स नॉट वर्किंग। इसी पे गुजारा करते हैं। तो इट्स ऑल्सो फिजिक्स बेस्ड पजल्स, कि जैसे आप यहाँ में देख रहे हैं कि आपको ग्रेविटी का ध्यान रखना पड़ता है, आपको जो है एयर रेजिस्टेंस वगैरह देखनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है किस टाइम पे जाके आप रोप को काटें तो फिर उसके मुंह में जाएगी कैंडी। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी फैसिनेटिंग मैकेनिक्स। कलेक्टिंग स्टार्स, आप लोगों को स्टार्स भी कलेक्ट करने होते हैं, ये भी आपकी कोर मैकेनिक्स होते हैं कि स्टार्स आप कलेक्ट करके आपको लेवल कंप्लीट करना पड़ता है। और स्टार्स कंप्लीट किए बगैर भी आप लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, मगर स्टार्स कंप्लीट करने से आप लोगों को बोनसेस मिलेंगे। सो दैट्स द कोर मैकेनिक्स एंड आल्सो फीडिंग ऑफ नॉर्म। इसके बगैर तो लेवलिंग कंप्लीट नहीं होगा। एंड सेकेंडरी मैकेनिक्स आर टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग, कि आप इस तरह से टाइमिंग करें उसकी कि आप सारे के सारे स्टार्स ले जाएं, और आप सारे के सारे जो हैं उसको कैंडी भी मिल जाए।
सो दैट्स ऑल्सो सेकेंडरी मैकेनिक। ज़रूरी नहीं है आप तीनों के तीनों स्टार्स लेकर ही जाएंगे। आप एक स्टार से भी गेम पास कर सकते हैं, आप 0 स्टार से भी गेम पास कर सकते हैं। और दैट्स ऑल्सो सेकेंडरी मैकेनिक्स। बबल्स इसमें यूज़ होती हैं। बबल्स क्या करती हैं कि वैसे आपकी कैंडी नीचे जा रही होती है, मगर बबल के थ्रू वो वर्टिकली ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो आप इस मैकेनिक को भी लेकर आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थिंक ऑफ इट एज अ गेम डिज़ाइनर के इसके गेम डिज़ाइनर ने क्या सोचा होगा ये बनाते हुए। They can also make a game like just a rope and a candy and just put it in your mouth of the monster, but it will be too boring. So that's why they add secondary mechanics to juice up the core mechanics. So secondary mechanics बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी core mechanics को support करने के लिए। और मैंने स्लाइड के अंदर इसका लिंक भी दे दिया है। गेम अगर आपने खेलनी है तो दैट्स आल्सो अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉयड एंड आल्सो फॉर ऑन वेब। एंड द डिज़ाइन डॉक आल्सो आई शेयर्ड हियर। उसने बताया हुआ है कि ये गेम किस तरह से बनाई गई थी, यानी डेवलपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सॉरी डिजाइनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो लेट्स टेक अ फन एक्टिविटी। आई गेस मूसा आपको ये शेयर कर देंगे लिंक प्लेटफॉर्म और टूल किट का। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों का अब देखते हैं मैकेनिक्स। आप लोगों को कितने गेम डिजाइनर अपने अंदर का निकालना है आपने। सो दैट्स अ वेबसाइट नेम्ड प्लेटफॉर्म और टूल किट। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको रन वीडियो ऐसे करने हैं। मैं इसका म्यूजिक म्यूट कर देता हूँ और आई स्टिक द इंस्ट्रक्शंस एंड जस्ट स्टार्ट हियर। तो बेसिकली इसके अंदर ये एक प्लेटफॉर्मर टाइप आपकी टूल किट दी होती है, जहाँ पे आप इसको मैनिपुलेट करके डिफरेंट तरीकों से आप इसको खुद एज अपनी गेम की तरह आप डिज़ाइनर के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से मूव अगर करूँ WASD से, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसकी मूवमेंट काफ़ी ख़राब है अभी। कि ये देखें बहुत ज़्यादा स्लाइड करता है ये, और स्टॉप नहीं करता अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर भी लूँ। और ये यानी कि इसकी मूवमेंट में इतना जूस नहीं नज़र आ रहा। सो व्हाट वी गोना डू विल मेक इट मच बेटर एज अ गेम डिज़ाइनर। तो यहाँ से मैं ड्रैग डाउन करूँगा और ये आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं फॉर रनिंग, जंपिंग, कैमरा, असिस्ट। आप इनको ट्वीक करके आप अपनी इसकी फिजिक्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो we're gonna बी फोकसिंग ऑन रनिंग एंड जंपिंग। बाकी कैमरा, असिस्ट एंड जूस ये आप लोगों के लिए है, आप लोग आगे एक्सप्लोर कीजिए। सो रनिंग में हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सलरेशन काफ़ी देर बाद पकड़ता है। सो आई ट्राई कि एक्सलरेशन इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दें। आई गेस 30 विल वर्क या इट्स सो फास्ट। और ये रुकता भी नहीं है इतना जल्दी, काफ़ी देर बाद रुकता है। इसकी डिसलेरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी और। यस, ओके। और इसकी मुझे लग रहा है टॉप स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। सो आई एम ट्वीक डाउन द मैक्स स्पीड ऑफ दिस। बाय द वे ये मैं अपने लिहाज से सेट कर रहा हूँ, आपके लिहाज से टोटली डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों को जो फील में बेहतर लग रहा हो। गेम डिजाइनिंग ऑल अबाउट व्हाट यू फील एंड व्हाट यू ट्राई अदर्स टू फील लाइक। तो कोशिश किया करें कि अपनी थिंकिंग को भी इस तरह से अलाइन किया करें कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिहाज से। आई गेस इट्स 9 सही रहेगा। एक्सलरेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। टर्न स्पीड, सो द टर्न स्पीड इज हाउ यू टर्न, कि टर्न होने की कितनी देर बाद आपकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। दैट्स फील गुड टू मी। लेट्स सी। इसका जंप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का है और इसके अंदर कंट्रोल भी काफ़ी कम आ रहा है, यानी मिड एयर रेजिस्टेंस इतनी फील नहीं हो रही। लेट्स ट्वीक इट आउट। जंपिंग में आई कैन रिड्यूस द जंप ड्यूरेशन, और जंप की हाइट भी सोची कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। एयर एक्सलरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड एयर कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कि एयर कंट्रोल आपको बताता है कि आपके एयर में कितना कंट्रोल होगा। जैसे अगर मैं एयर कंट्रोल को मैक्स पे करूँ
तो अगर मैं चल रहा हूँ, चलते हुए मैं आगे पीछे भी हो सकता हूँ। आगे मैं जा रहा हूँ तो वापस पीछे को हो सकता हूँ। मगर अगर मैं एयर कंट्रोल को ज़ीरो कर देता हूँ, तो अब मैं जंप मारता तो मैं वापस को नहीं मोड़ सकता। जहाँ को उसकी ट्रेजेक्ट्री है वहीं को ही जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छी वैल्यू पे ले आते हैं। 24 25 पे शुड बी गुड। या इट लुक गुड। आई गेस अब अच्छा लग रहा है ये। या I also recommend you guys to try this out and play around with this stuff and make your own platformer with some good mechanics. Okay, so let's move on with the slides. We have less time. Okay, so we need to also consider ethical considerations while making our game. We're not gonna make some game that just is it just comes into mind and we're gonna make it. We need to see if our audience are not getting triggered with our game. So don't trigger your audience. Ensure content is appropriate and respectful and respect your cultural sensitivities. Like this game, it's a clone of Flappy Bird, but it uses the 9/11 theme, which is a very controversial topic, and that's why it's not a good option to make a game on this, especially on commercial scale. तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी कल्चरल इनसेंसिटिविटीज़ हैं उनसे आपको हट के जनरलाइज गेम बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस मैक्सिमाइज हो सके। कॉल ऑफ ड्यूटी की काफ़ी गेम्स हैं जो आप लोगों की इसके अंदर आती हैं। जापान के अंदर बैंड है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर गेम्स बनाई हुई हैं और उन्होंने उसके अंदर बताया हुआ है कि हाँ, अमेरिका इज़ द राइट वे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर एंड दे वर राइट ड्रॉपिंग द न्यू stuff like that. I don't wanna go in details. So you're not gonna trigger your audience, please. Avoid insensitive themes. So that's the fun part. Monetization. Who doesn't want to earn money from their games? Let's see how. These are some very interesting numbers about our gaming industry. So our gaming industry has $68 billion of revenue. That's bigger than the whole Hollywood revenue, which is only $42 billion, which means that all the movies that they make revenue annually, it's not bigger than the gaming industry revenue, and it's still the number one in the world. It also has 2 billion users around the world. Out of the 8 billion, 2.6 billion users are gamers. So I think every one in fourth person is a gamer. And most of the revenue of our games are made from mobile games because every second person has a mobile and they mostly give purchases or play ads on their mobiles, and that's why most of the revenue is generated from mobiles. And Asia contributes almost to half of the revenue, especially China, Korea, Japan, and also our South Asia. They also contribute a lot towards the revenue. So that's a big and huge marketplace for the global game industry. They will never make a game जो इन regions को निकाल के टारगेट करती हो, तो ऑलवेज इन रीजन्स को तो वो लाना ही चाहते हैं। इस वजह से वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। And also, females tend to spend more on games. I don't know why, but they spend more on games. And there's also more. Most of the company shares are taken by casual games, like the very casual games, and 11% is taken by action games like Call of Duty and other stuff like that, blockbuster games. And there comes the business models, like how your game's gonna make money. So there are basically three basic models about how you can earn game money from your game. First one is the free to play. Like most of the games you see are free to play, but you think that how are they gonna make money if they are free? मगर जो फ्री गेम्स होती हैं वो आपको पता भी नहीं लगता और आप लोगों से इतना रेवेन्यू जनरेट कर जाते हैं। एंड स्टडीज हैव फाउंड के आप लोगों की जो फ्री गेम्स हैं वो वे मोर आपका रेवेन्यू जनरेट करती हैं पेड गेम्स की निस्बत। कैसे करती हैं? इनके काफ़ी तरीके होते हैं। इनकी एक होती है डायरेक्ट
तरीका होता है, कुछ इनडायरेक्ट तरीके होते हैं। अब डायरेक्ट तरीका क्या होता है, फ्री टू प्ले गेम्स आप लोगों की एड्स यूज़ कर रही होती हैं, और उन एड्स के अंदर आगे मैं बताता हूँ किस टाइप की एड्स होती हैं। For now, free to play games are making much more revenue. Second up are the premium games, which means yeah, you're gonna pay one time and the game is yours. For example, for example, before PUBG was paid and now it's free, but it was then paid and it was a one-time payment. You're gonna never gonna be charged again. And the third one is a recurring subscription, which means that you're gonna be charged monthly on playing games. Most of the time these games aren't that much running in the market. They are not much supported because no one's gonna pay a monthly on just for a game. There's a market share like 4% of the games are actually paid, and 53% of games are run on ads, and 43% of the revenue comes from in-app purchases, like you buy some coins, buy some diamonds from in the game. And there are also indirect methods like merchant media. I will also discuss them later. So, ad types. Yeah, there are three types of ad types. First one is a banner type, like the one you see bubble witch to Sega, which just pops up on your screen and you need to close. कभी कभार आप लोगों को क्लोज वाला बटन नहीं मिल रहा होता, आप गलती से ऐड को क्लिक कर देते हैं, बट फॉर एवरी क्लिक दे गेट पेड। दूसरी आप लोगों की इंटरस्टिशियल होती हैं गेम्स एड्स, जो आप लोगों की इंटरेक्टिव किस्म की एड्स होती हैं, जैसे ये ब्लास्ट ऑल ब्लास्ट वाली है एड, किसी तरह आप खुद ट्राई आउट करते हो किस्म का डेमो गेम का कि किस टाइप की गेम है। एंड थर्ड वन इज़ अ रिवॉर्डेड एड टाइप्स, लाइक अगर आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर आप लोगों की गेम ओवर हो जाता है, तो आप लोगों को वो दोबारा कहते हैं कि ट्राई अगेन जस्ट बाय वाचिंग एन एड। तो आप लोग ऐड देखते हैं, ऐड से आप लोगों को एक और ट्राई मिल जाती है। सो दैट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ एड विच इज कॉल्ड रिवॉर्डेड। Next up is the merchandise and media. These are considered as the indirect way of earning money from your game, like the one I showed in the slides. This is the Angry Birds. Okay, this is the Angry Birds merchandise, and they also made a movie just to promote their game, and they were really successful, and a lot of people buy their merch and watch their movie. Their movies are also very popular. So that's also a way of earning for gaming industry. Now, that's the main question most of you guys were asking me, how to start as a game developer. By the way, this was not meant to be a game developer session, but I had to add some roadmap for you guys to go after this boot camp. देखिए बूट कैंप आप लोगों के बेसिकली मैंने जो गोल रखा था इस बूट कैंप का वही था कि आप लोगों को एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, कि जिनको गेम्स के बारे में भी सेंस वगैरह काफ़ी लिटल है, तो उनको थोड़ा बहुत गेम्स के बारे में सेंस आए कि हाँ अच्छा गेम्स क्या होती हैं, गेम्स की टाइप्स कैसे होती हैं, कैसे लोग इससे पैसे कमाते हैं, कैसे आप इसको एज अ कैरियर परस्यू कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या है, आप इसके लिए ट्राई करना शुरू करें। जब आपके पास सेंस आ गई है, नाउ यू कैन डाइव इनटू द फील्ड। सो हाउ कैन यू डाइव इन द फील्ड? फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट अ रोल। सेलेक्ट इफ यू गोना बी अ गेम डिजाइनर, अ गेम प्रोग्रामर और अ गेम आर्टिस्ट। ये तीन फील्ड्स होती हैं, मेजरली आप लोगों की यही तीन फील्ड्स होती हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर। गेम डिजाइनर, एज यू नो, वी हैव बीन स्पीकिंग फॉर द पास्ट टू लेक्चर्स। गेम डिजाइनर आप लोगों की गेम डिजाइन करता है, यानी हाउ इज गोना गेम लुक लाइक। And game programmer does the hard stuff. He does the programming, using programming languages and implements the game. And third one is the game artist, which is the most creative one. He creates the assets, creates the mockups like the Illustrator stuff, etc., Blender stuff, 3D images and models, all are created by a game artist. So you need to select one role before entering the industry. But it's okay if you are not, if you are a bit confused in the roles. ज़रूरी नहीं है, आप लोगों का हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है कि आप लोग चूज करके ही इंडस्ट्री में जाएं। और कभी कभार ऐसे भी होता है, स्मॉल स्केल आप सोलो गेम बना रहे हैं,
गेम डिज़ाइनर भी आप ही होंगे, गेम प्रोग्रामर भी आप ही होंगे, गेम आर्टिस्ट भी आप ही होंगे। मगर हमेशा ऐसे नहीं होता। मोस्टली जब आप आएंगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएंगे तो आप लोगों की ये फील्ड सेपरेट आउट हो जाएंगी। यहाँ तक कि जो आपकी गेम डिज़ाइनर है ये भी आपका एक गेम डिज़ाइनर नहीं रहेगा, ये आप इतने गेम डिज़ाइनर्स हो जाएंगे लाइक दिस। आप लोगों का यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर अलग हो जाएगा, आप लोगों का ओपन वर्ल्ड डिजाइनर अलग हो जाएगा, क्वेस्ट डिजाइनर अलग है, इकोनॉमी डिजाइनर, नैरेटिव डिजाइनर, सिस्टम्स डिजाइनर, गेम प्ले डिजाइनर, टेक्निकल डिजाइनर्स। लाइक इट्स जस्ट एन इंडस्ट्रियल स्केल स्टफ। मगर मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो होता है गेम डिजाइनर एक ही होता है। एंड समटाइम्स ऑल इन वन टाइप की सिचुएशन भी होती है। मगर जितना ज़्यादा लार्ज स्केल पे आप गेम बनाते हैं उतनी ज़्यादा आप लोगों के रोल सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं। So next up, how you gonna do make the games? People use most of the tools for making games. Like for game designers, they use a Trello board for sorting down the stuff that they're gonna add in the game. They create a table-like structure and they add in the value, add in the stuff that they want to add, and they sort them out as some new working on or done, etc. And they also have good PowerPoint, Notion skills so that they can convey what they want to the game programmer and the game artist. They also use stuff like Jira and generative AI tools like ChatGPT, etc. But I won't recommend you guys to just go in and use generative AI tools for making games. I like you to explore first in the industry, see what are the good games, explore the documentations, and then take help of AI. And what the game programmer does, he uses either of the two engines. These are the most two popular engines, Unity and Unreal Engine. यूनिटी आपका मोस्टली यूज हो रहा होता है लो बजट गेम्स, यानी कि आपकी लो स्केल पे गेम्स बन रही होती हैं, या मोबाइल गेम्स मोस्टली आपकी यूनिटी पे बनती हैं। और अनरियल इंजन आपका रियल स्टफ के लिए होता है, यानी कि कोई हैवी गेम्स बनानी हो आपने, वो अनरियल इंजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और मोस्टली जो आपकी पीसी की ट्रिपल ए गेम्स आती हैं वो सारी आपकी अनरियल इंजन पे ही बन रही होती हैं। नेक्स्ट अप, आप लोगों को एक कोडेटर भी चाहिए होगा इसके लिए कि आप लोगों ने गेम्स कोड कैसे करनी है। सो VS Code is mostly and Raider editor is the most common choice for game developers. और यूनिटी के अंदर आप लोगों की सी शार्प के अंदर हो रही होती है डेवलपमेंट, और अनरियल इंजन के अंदर आपकी C++ में हो रही होती है एडिटिंग डेवलपमेंट। और यूनिटी कंपेरेटिवली इजी होता है आप लोगों का अनरियल इंजन से, सो आई रिकमेंड कि एज अ बिगिनर यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद यूनिटी, देन यू मे अपग्रेड टू अनरियल इंजन, बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग यूनिटी से ही स्टार्ट करें। एंड फॉर द गेम आर्टिस्ट ही यूजेज मोस्टली ब्लेंडर। ब्लेंडर तो आप लोगों का ऑलमोस्ट हर एक गेम आर्टिस्ट वो यूज़ कर रहा होता है, जो 3D में अगर आप लोग गेम बना रहे हैं तो। सो 3D गेम्स के लिए ब्लेंडर आप लोगों का 3D मॉडल्स वगैरह बना रहा होता है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर टू मेक 2D स्टफ। लाइक मैंने पिछले साल गेम बनाई थी एक, उसके अंदर हम लोगों ने 2D गेम बनाई थी, तो वो 2D गेम हम लोगों ने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ही यूज़ किया था उसके अंदर। And Maya by Autodesk is also another option for Blender. People have personal preferences, कुछ Blender यूज करते हैं, कुछ Maya, I don't know why। और मोशन ब्लेंडर यूज करते हैं एनिमेशंस बनाने के लिए। तो बी प्रैक्टिकल। आप लोग यहाँ से ट्यूटोरियल्स देखते रहेंगे, बूटकैम्प देखते रहेंगे, मगर जब तक आप लोग खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना शुरू होंगे तब तक आप लोगों की लर्निंग ज़ीरो होगी। बिकॉज देयर इज़ नो सच डिग्री आप लोगों को जो सिखा दे कि गेम डेवलपमेंट क्या होती है। एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कोई भी गुड कॉलेजेस नहीं है जो आप लोग गेम डेवलपमेंट सिखाते हों। बाहर होंगे, बाहर हैं, मगर वो जितने एक्सपेंसिव होते हैं तो मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो भी आप लोगों को गेम डेवलपमेंट का एक्सपोजर दे देंगे मगर बनानी आपने खुद है। सो द ओनली वे टू लर्न हाउ टू मेक वीडियो गेम्स इज टू एक्चुअली मेक वन। बेशक आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, जस्ट होप इन। आप लोग खुद इंटर होंगे तो आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को लर्निंग होगी। And once you make some games, you need to showcase also skills. Not like this, what are your skills and you're gonna stand in your chair.
but some real skills like you made a game and then what you're gonna do, you're gonna make a portfolio, upload it in LinkedIn, publish your game on itch.io. It's also a very good platform to publish indie games which you made solo. एंड आई रिकमेंड कि आप लोग बजाय इसके कि सोलो आप लोग सारी ऑल इन वन चीज़ें करें, आप लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स को प्रेफर किया करें गेम डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि सोलो बंदा जो है वो वन वे थिंकिंग करेगा सर। हालांकि जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप लोगों के आइडियाज आपस में इंटरेक्ट करेंगे और आप लोग कुछ ज़्यादा फैसिलिटिंग, ज़्यादा क्रिएटिव स्टफ बना सकते हैं। सो ग्रुप प्रोजेक्ट्स ऑलवेज कम अप विद सम मच बेटर आइडियाज एंड ऑल्सो प्ले गेम्स, ऑलवेज प्ले गेम्स. The more you play games, the more you get knowledge of your game's aesthetics, game mechanics, and everything. And you will also be good at game development if you play more games. It's not harmful. It's good, actually good. It's good for your mental health to play games, but overuse is obviously bad. That's a statement of Gray Napper Creative Assembly from Creative Assembly. He actually created a game called Alien Isolation. You guys might have played, it's a PC game. He said that like any developer team, we play a lot of games and each have our favorites. Often our decisions and choices are colored by the games we play. तो हम लोग जो गेम्स खेल रहे होते हैं उसी के थ्रू हमारी इमेज रिफ्लेक्ट, वही इमेज हमारी हमारी गेम डेवलपमेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि जो आपका गेम डिज़ाइनर होता है वो किस तरह की गेम्स खेल रहा होता है, और उसी के वही हमें इंस्पायर करती है न्यू गेम्स बनाने के लिए। और हमारी जो न्यू गेम्स बनती हैं उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रेटजीज यूज होती है, हम थोड़ा बहुत उसके अंदर क्रिएटिव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल folks. I hope you guys enjoyed, and that's the end of the session too. So any questions? Fire away.